हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू CivTech सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मास्टर क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 25 MCQs जो काफी इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 126 से 150 तक आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें और CivTech सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर आपके साथ ये क्वेश्चन और इसकी एक्सप्लेनेशन शेयर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 126 says that a beam of uniform strength may be obtained by option A, keeping the width uniform and varying the depth, keeping the depth uniform and varying the width and depth both, D, any one of the above. So uniform strength किसी भी बीम की इन तमाम चीजों में से कोई भी होते हुए अचीव की जा सकती है। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ हैज ऑप्शन ए सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द बीम, बी सेम बेंडिंग स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन, सी सेम बेंडिंग मोमेंट एट एवरी सेक्शन, डी सेम शियर स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन। यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ किसी भी बीम की अचीव होगी कि वहां पे सेम बेंडिंग स्ट्रेस है किसी भी सेक्शन के ऊपर। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 128 द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज डैश बेंडिंग moment equal to, B less than, C more than, D directly proportional to. The bending stress in a beam is directly proportional to the bending moment. So D is the correct option. 129 at the neutral axis of a beam, option A, layers are subjected to maximum bending stresses, B the layers are subjected to minimum bending stress, C layers are subjected to compression, D layers do not undergo any strain. Neutral axis किसी भी बीम के ऊपर layers do not undergo any strain. So D is the correct option. 130 the neutral axis of a beam is subjected to dash stress. Option A 0, B maximum tensile, C minimum tensile, D maximum compressive. A is the correct option. Neutral axis किसी भी बीम के ऊपर stress जो है वो 0 होती है। 131 the neutral axis of a transverse section of a beam passes through center of gravity of the section and is option A in the vertical plane, B in the horizontal plane, C in the same plane in which the beam bends, D at right angle to the plane in which beam bends. So इसमें न्यूट्रल एक्सिस ट्रांसवर्स सेक्शन में right angle to the plane in which beam bends is the correct option. D here is the correct answer. 132 on one side of a neutral axis of a beam there is a tensile stress and on the other side of the beam there is a compressive strength. A is agree, B is disagree. Neutral axis के एक तरफ टेंसाइल होती है और दूसरी तरफ कंप्रेसिव, सो इट्स ट्रू। ए इज द करेक्ट आंसर। 133 इन अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन एनी फाइबर इज डैश द डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो किसी भी बीम की जो प्योर बेंडिंग में हो उसकी इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस इन एनी फाइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी स्ट्रेस कम होगी, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतनी स्ट्रेस ज्यादा होगी। When a rectangular beam is loaded transversely, the maximum tensile stress is developed on the option A top layer, B bottom layer, C neutral axis, D every section. Top layer is the correct answer. कोई भी rectangular beam transversely load apply होता है, so maximum tensile stress उसमें ऊपर की तरफ होती है neutral axis से। When a rectangular beam is loaded transversely, और जब उसके मुकाबले में कोई rectangular beam transversely load होता है, the zero stress is developed on the neutral axis. That is correct. A is the correct option. When a rectangular beam is loaded transversely, the maximum compressive strength is at top layer, B bottom layer, C neutral axis, D every cross section. So maximum compression जो है वो bottom layer के ऊपर होती है और tension top layer के ऊपर और zero stress जो है वो neutral axis के ऊपर। So here B is the correct option. 137 when a rectangular beam is loaded longitudinally, the shear force develops on the top layer. Option A agree, B disagree. It develops at the bottom layer. So B is the correct option, which is disagree. At the neutral axis of a beam, shear stress is option A 0, B minimum, C maximum, D infinity. So C is the correct option. It's maximum. The maximum shear stress developed in a beam of rectangular section is dash the average shear stress equal to 4/3 times 1.5 times twice. तो उसकी मैक्सिमम shear stress जो है वो रेक्टेंगुलर बीम की 1.5 times of the average shear stress है। C is the correct option. 140 the maximum
maximum shear stress developed in a beam of circular section is dash the average shear stress, जबकि circular section में ये 4/3 है. B is the correct option. 141. The ratio of maximum shear stress developed in a rectangular beam and a circular beam of same cross-sectional area is option A 2/3, B 3/4, C 1, D 9/8. 9/8 जो है वो correct option है. D is the correct answer. A beam of rectangular section is placed with its base horizontal. The maximum shear stress occurs at option A apex of the triangle, the mid of the height, center of the gravity of triangle, base of triangle. So B is the correct option, mid of the height. 143. The maximum shear stress of a beam of rectangular section occurs above the neutral axis. True. A is the correct option. B was incorrect, but here A is the correct. 144. A beam of T section is subjected to a shear force of F. The maximum shear force will occur at option A top of the section, B bottom of the section, C neutral axis of the section, D junction of web and flange. So C is the correct option, which is neutral axis of the section. T section के केस में maximum shear force जो है वो neutral axis के ऊपर होगा. 145. A flitched beam is used to option A change the shape of beam, effect the saving in material, C equalize the strength in tension and compression, D increase the cross-sectional area of the beam. So C is the correct option. It equalizes the strength in tension and compression. 146. In spring balances, the spring is used option A to apply force, B to measure force, C to absorb shock, D to store strain energy. It is used to measure the force. So B is the correct option. 147. In watches, the spring is used to absorb shock and vibration. Option A yes, B no. So it does not use for shock absorption. B is the correct option. 148. The spring in cars are used to store strain energy. A correct, B incorrect. It is incorrect. B is here is the correct answer. 149. The spring in brakes and clutches are used to option A apply force, B to measure forces, C to store strain energy, D to absorb shocks. ब्रेक्स या क्लचेस के अंदर जो स्प्रिंग्स हैं वो फोर्स अप्लाई करने के लिए या ब्रेक पैडल के लिए यूज होता है. सो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है टू अप्लाई फोर्स. 150. A spring when loaded is permanently distorted and recover its original shape when the load is removed. ऑप्शन ए एग्री, बी डिसएग्री. यस, स्प्रिंग का यही फंक्शन है, जब लोड किया जाता है तो ये परमानेंटली डिस्टॉर्ट हो जाता है और जब लोड रिलीज किया जाता है तो ये वापस अपनी शक्ल में आ जाता है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज एग्री. तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 25 एमसीक्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 126 टू 150 आपके साथ शेयर किए. आई होप आपने काफी लर्निंग डेवलप की होगी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. तो मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पे हम फर्दर 25 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे. सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सिर्फ सिंप्लीफाइड को जरूर सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.